Howdy everyone, this is Astha Joshi and you're watching Learning Never Stops and yes, I'm back with my hoop yet again. तो इस वीडियो में मैं अपनी लास्ट वीडियो को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके चलूँगी. सो आई होप आपने वो वीडियो देखी है. अगर आपने नहीं देखी है मैं उस वीडियो को लिंक करूँगी फॉर यू गाइज. दिस इज़ हाउ टू हुप फॉर बिगिनर. और अगर आप उस वीडियो को देख के हुप नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है. एंड ऑल्सो मैं उस वीडियो को एज अ रेफरेंस वीडियो लेके चलूँगी. सो मेक श्योर कि आपने वो वीडियो देखी है. अगर आप नहीं देखी है देन जस्ट क्लोज दिस वीडियो, गो टू दैट वीडियो, वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम बैक हियर. 1, 2, 3 ना उस वीडियो को शायद देख के आपको लगता होगा कि ओह आई होपिंग इज सो ईजी एंड आई बी एबल टू डू इट. और जैसे ही आपने अपना हुप उठाया होगा आप शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हुए हों. ओके ऐसा क्यों हुआ है? आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट. नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने उस वीडियो में मिस करी बिकॉज दैट वीडियो वॉज ऑलरेडी टू लॉन्ग, वो है कि अपना हुप उठाने से पहले मेक श्योर दैट यू वार्म अप योर बॉडी एंड मेक इट रेडी फॉर हुपिंग. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को हुपिंग करने के लिए रेडी करें. ओके नाउ जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ पर्सन हु हैज़ गॉन टू द बीच. ओके और आपको कोई उस पानी में धक्का दे दे, यू नो इन द सी, आपको बस धक्का दे दे, आप तैर नहीं पाएंगे ना ही, जबकि आपको तैरना भी आता हो अब तब भी उनको अब बिट ये क्या हुआ अचानक से. सो सिमिलरली अगर आपको एकदम से कोई हुप दे दे और बोले कि हुप करो, नहीं कर पाएंगे बिकॉज बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर इट. तो आपको अपनी बॉडी को रेडी करना है. नाउ बिफोर यू इवन मेक योर body ready, make sure that you're making hoop friendly clothes. और ये hoop friendly clothes क्या भला है? मतलब अब क्या hoop करने के लिए मुझे अलग से कपड़े खरीदने पड़ेंगे? No. I have very recently made this another video. मैं अपनी वीडियो को पब्लिसाइज नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं उनकी वो नहीं कर रही हूँ मैं. And I'm just giving you because these small things really matter. आप क्या पहन के hooping कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है. Because the way you hoop to give effectiveness to your hooping, to give better results to your hooping experience, आप क्या पहनते हैं वो भी मैटर करता है. सो आई विल लिंक दैट वीडियो ऑल्सो फॉर यू. यू कैन व्यू इट एनी टाइम. ओके ऐसा नहीं है कि उस वीडियो को देखे बिना आप इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. यू कैन. ओके लेकिन वो वाली वीडियो ज़रूर देखना. ओके द hooping one. Okay now, so if you're wearing your clothes, if you've done your warm up exercise, also I will definitely make a video on how to warm up before hooping for sure. Okay, so once you've warmed up your body, you are going to grab your hoop. Okay, now as a hooper I would want कि मैं अपने hoop को अपनी waist पर अपनी मर्जी के अनुसार रख पाऊँ. एज इन जितनी देर मैं चाहती हूँ उतनी देर तक हुप जो है वो मेरी वेस्ट पर रहे, उससे नीचे ना गिरे. आई मीन इट्स सो अनोइंग जब वो बार बार गिरता है. ओह पिक अप एंड देन अगेन स्टार्ट डूइंग. सो आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू not let your hoop fall down. I will definitely tell you, but not in this video. I will make another video for that. लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका हुप बार बार गिर रहा है तो वो क्यों गिर रहा है वो अभी हम देखते हैं इस वीडियो में. Okay, let's get started here. Now in how to hoop video I've already told you about stances. Okay, we have two stances. We have the rocking stance and we have the wiggling stance. Okay, for now I'm taking the wiggling stance. Okay, and we will start hooping. Make sure that you launch your hoop properly. Just go boom. I have told you how to launch your hoop in the last video. Please watch it. Okay, now we're going to start hooping. Make sure आपके हाथ फतर इधर उधर नहीं भाग रहे हैं. For beginning, okay, you can of course exercise your hands also when you're hooping, but we will go to it later. For a beginner I would want your hands to be folded in. Okay, you can either keep them folded. अगर यहाँ पे भी आपको comfortable नहीं लग रहा है then you can just hold your shoulders with your hands and keep them tucked in. Okay, so that वो आपको डिस्टर्ब ना करें, आप ऐसे ना करो. Right, so just tuck them in. When you tuck them in you will see instantly जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपको
हुप का वेट अपने कोर पर कम महसूस होगा। और जैसे ही अपने हाथों को आप इधर से इधर ले आएंगे, you will see your core is going to work more now. Why is this happening? I will tell you the reason. Now, जब ऐसे कर रहे हैं तो आपका हैंड्स भी आपके हुप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, आपका हैंड्स भी आपके हुप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, आपकी बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। When you do this, then it's just your core. It's just your core. Okay? So you will feel it more on your core now. So if you want to work out your core, do like this. Okay? हम hand exercising भी सीखेंगे. I will make a video on that, of course. But for now, let's concentrate on hoop. Now, बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसे hoop. That can be because of your body posture. Let me go like this. Now, if you'll see, I'm standing straight. I'm not stiff, but I'm straight. I'm calm. My body is relaxed. Now, if you are moving, अगर आप आगे की तरफ बेंड कर रहे हैं, आपका सेंटर पॉइंट चला गया, तो हुप के गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं, नॉट अ गुड पोस्चर, हुप गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, प्लस बैक इंजरी। ओके, नाउ I had one of my student and she would hoop like this. She would hoop like this. Bad posture. It will affect your back. Okay? उसका hoop गिरता नहीं था, but this is a wrong posture. This is a very, very wrong posture. Okay? This will affect your back. So make sure that you straight. आपको अपना figure straight रखना है. Be it a rocking stance, be it a wiggling stance. Make sure you straight. Not stiff, straight. Your core is, it's engaged. Your hands are in and you're straight. Okay? Very, very, very important thing. Now, next thing that I want you to remember when you're hooping is that you do not hoop right after eating. You can hoop any time of the day. Morning, afternoon, night, evening, any time of the day, but not immediately after you've had something to eat. Okay? Because if you see my hoop is hitting my core, my hoop is hitting my stomach. Okay, so you can't keep it filled. Okay, ये directly impact डाल रहा है हमारे stomach पर. Okay? Even water, make sure that you can sip onto water when you're hooping. अब बीच में आपको अगर प्यास लगे आप बिल्कुल पानी पीजिए, but make sure that you're drinking only few sips. Okay? Do not fill your stomach with water. It will start paining. It will start hurting. Now, as a beginner, I would literally suggest you to hoop for at least 15 to 20 minutes every day to come to stability like this. Now, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप कितने साल से hooping कर रहे हैं, हम कब आपकी तरह hooping कर पाएंगे? तो well, for me it has been for about 6 years that I've been hooping, but to come to this level you don't need 6 years. You just need few weeks, maybe a month or 2 or 3, and you'll be here. Trust me, it's only that much of time, but you need a persistency. आपको वो maintain करके रखना है. ऐसा नहीं कि आज hoop करा फिर 2 हफ्ते छोड़ दिया फिर hoop उठाया. No, it won't work that way. Of course, when you're menstruating, especially women, if you're menstruating, then you can take a gap, but otherwise try to keep it, try to do at least daily. If not daily, then maybe every alternate day, pick up that hoop and just go zoom. Okay? Best thing is कि आप उसको indoor भी कर सकते हैं. Just create some space and hoop. Now, once you're done hooping, because the hoop hits your stomach all the time, you might just feel a burning sensation like I am right now. तो आपको अपने waist पर एक burning sensation feel हो सकती है. आपका waist जो है, if you can see how red it has become, can it catch the color? Okay, now it has become red.
शुरू में हो सकता है कि आपको ब्रूजेस भी आएँ, बट इट इज़ नथिंग सीरियस, डोंट वरी अबाउट इट. अगर ज़्यादा ब्रूज आ रहा है, जस्ट टेक अ गैप 1 or 2 days एंड देन स्टार्ट अगैन. ओके, वैसे इससे आप ब्रूज आना नहीं चाहिए. कहीं आपको लग गई, हिट हो गया इन द प्रोसेस, देन ऑफ कोर्स. But yes, this redness will definitely come. And now why it has come? This is not a bad thing, this is a good thing. This is because जब hoop आपकी body को hit करता है, it is gonna hit your body, it's gonna massage your body, it's gonna hit it. And then when that happens, it stimulates that part of your body. So it has stimulated my stomach. And now what is happening? The blood gushes and rushes towards that place. जहाँ पे आप उसको मसाज करते हैं, हम क्यों अपने सर को मसाज करते हैं? सो दैट द ब्लड रशेज दैट प्लेस, एंड देन व्हेन ब्लड गोज टू दैट प्लेस, मोर ऑक्सीजन कम्स टू दैट प्लेस, बिकॉज ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है और तो आपकी बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है. तो इसी तरीके से जब आपके इधर वो हिट करता है, देन ब्लड गशेज हियर, देयर इज़ मोर ऑक्सीजन हियर, और फिर आपका जो फैट है वो जल्दी बर्न होता है. ओके, दैट्स वाई हुपिंग इज़ सच अ ग्रेट एक्सरसाइज एंड इट्स रियली इफेक्टिव. और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली हिटिंग योर कोर. ओके, एंड इट मेक्स इट रेड. नाउ इसमें इचिंग की सेंसेशन बहुत होती है. कसम से मेरा मन कर रहा है मैं इस समय ऐसे खुजा दूँ अपने स्टमक को, बट take it easy, don't do that. Just massage, and it will get calm in some time. So just like few minutes and it will get calm. Okay, so don't worry, just massage it and limber down and just relax. Okay, now that you've hooped, relax your body, come back to your normal breath and carry on with your day. The next video I'm planning to make is more about how to exercise with your hoop, not just your core, not just your waist, but your hands, how to bring in your hands exercise, how to work out your legs along with the hoop, and yeah, so many more. And then I'm also going to make how to not let your hoop fall down. If it is falling down, how to again lift it back up. So I'm going to make these videos. They are already in my bucket list. If you have more suggestions, then please do send it to me. I will definitely make videos on that. And if you want more information, you can always message me in the comment section, or you can on my Insta. I will link that for you. You can send messages there. I will link this hoop from where to get it. This is a Vector X hoop. No, Vector X does not sponsor me, though I wish ऐसा होता कि Vector X ने मुझे sponsor किया होता. Vector X, if you're listening, sponsor please. But no, ये hoop है ही इतना अच्छा that I always talk about this hoop. So I will link this hoop. This hoop is very much available on Amazon in India or anywhere else. Just type in Vector X hoop and you will get it. Okay, so इस hoop का भी मैं link I will put it in the description box. Remember, if you have back problems, then ask your doctor if you are fit enough to hoop. Though hooping is a great exercise for your back. Alright, that's all for this video today. I hope that I will see you soon, and yeah, come back and we shall hoop more. Adios amigos and amigas. I love you all. No, this is not right. Straight